इंसान में ये युग नहीं है युद्ध का, ये युग नहीं है युद्ध का, ये युग है अब बुद्ध का, बुद्ध का, बुद्ध का। मैं 2016 में पहली बार मिला, मेरे एक फ्रेंड है जर्नलिस्ट, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आए हुए हैं लद्दाख से, आप चलिए मिलना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ, मिलने में क्या प्रॉब्लम है, मिलने चलते हैं। हम लोग शाम को मिले एंड आई वॉन्ट बिलीव कि वी वर देयर ओनली फॉर अबाउट 1 आवर एंड गुरुजी सेड नहीं जैन साहब, अनिल जी आपको कल हमारे साथ लद्दाख चलना है। And he got the ticket also booked actually. It was really surprising because I've not seen he's booking the ticket for anybody in what I've seen during the last 7 years actually. और जहाँ जब मैं गया उनके साथ में, और काफ़ी लोगों ने कहा कि बच्चों ने भी कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, पता नहीं कौन है, बट मैंने कहा जाने में क्या प्रॉब्लम है, जाकर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं, कोई मतलब जस्ट कहते हैं कि एकदम से सडनली कोई कहे कि आप चलो लद्दाख चलो, कभी सोचा भी ना हो जो है। और वहाँ जाकर जो मैंने देखा, वहाँ पर जो इनका 250 एकड़ का ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, वहाँ पर जो ये काम कर रहे हैं, हम लोगों का जो स्कूल है 10+2 CBIC एफिलिएटेड स्कूल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और आपको ताज्जुब होगा कि जब ये कोविड पैंडेमिक हुआ, that government took over that hospital and declared as dedicated COVID hospital because there was no other facility in Ladakh. So we have treated, I think, almost all the patients of COVID-19 in our hospital. और हमारे पास सबसे बड़ा ओल्ड एज होम है वहाँ पर। आप देखेंगे कि एक बार देखने के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में अच्छा काम करने वाले लोग कितने हैं। हम लोग सुनते हैं रोज टीवी पर, और मुझे बहुत दुख होता है कि जब हम लोग डिफरेंट टीवी चैनल सुनते हैं और 100 न्यूज़ आती है मॉर्निंग में जो है, और उसमें से एक भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं होती, एक भी। 100 का 100 वो मर्डर हो गया, उसने मार दिया, उसने एक्सीडेंट हो गया, उसने कुछ कर दिया, उसने कुछ कर दिया। आई एम रियली शॉक्ड कि हो क्या रहा है कि दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, उनके बारे में क्यों नहीं बताते ये लोग। और बहुत लोगों से हम लोगों ने बात भी की, वो कहते हैं कि उसको TRP नहीं मिलती। हम जब इस टाइप की न्यूज़ देते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देते हैं, उसी से TRP मिलती है। तो पता नहीं ये क्या हो रहा है दुनिया में, बट जो हम लोगों ने देखा, और मैंने जब देखा वहाँ पर, मैं वहाँ पर 3 दिन रहा भी, और लगा कि अगर किसी को जीते जी अगर स्वर्ग देखना है, मरने के बाद तो पता नहीं हम स्वर्ग या नर्क में जाते हैं, लेकिन जीते जी अगर स्वर्ग देखना है तो आप लद्दाख होकर आइए। और ख़ास तौर से हमारा जो महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, और गुरुजी ने जो पिछले 36 साल से अकेले इतनी मेहनत करके जो बनाया, हम इस रियली बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन कि कैसे हो सकता है वहाँ पर लद्दाख में। वहाँ कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ आप रह नहीं सकते, वहाँ का टेम्परेचर -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उतनी बड़ी जगह पर इतनी बड़ी फैसिलिटीज क्रिएट करना, ये सिर्फ मेरे ख्याल में भंते संघसेना जी कर सकते हैं, और किसी की बात नहीं। और जब मैं गया, जब मैंने देखा, तो मैंने कहा इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। मैं गुरुजी को टोटली डेडिकेटेड हूँ, एंड माय स्पिरिचुअल जर्नी इज आल्सो विद गुरुजी ओनली। बट नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एंड द महाकरुणा आल्सो। And the motto of this organization is compassion in action and meditation in action. And this is the largest NGO in Ladakh, which was established in 1986 on a 250 acre of desert land. And over the past 36 years, with the single-handedly efforts of Guruji, this has been transformed into a heaven-like oasis. And it is rightly called Devachan. Devachan means the abode of God, जहाँ भगवान रहते हैं एक्चुअली। एंड नाउ वी हैव द वेरियस एक्टिविटीज। आई टोल्ड यू वी हैव मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल टीचिंग्स, एजुकेशन, ओल्ड एज होम, केयर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, वेरियस ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज, एंड दे अट्रैक्ट large number of peace loving people, not only from India, from abroad also. And what is more important, that we are in the process of developing a high altitude research and training center for yoga and meditation for defense personnel, because we have a large number of defense personnel and we have a lot of climatic problem in Ladakh.
So Guruji has decided that we should take care of them because they are protecting our country. They are the most respectable people actually. And now Bhante Sanghasena is the most charismatic, highly energetic, social and spiritual reformer. And the organization founded by him is more than an organization. It is a movement for change. And MIMC has always kept Mahakaruna, what we are celebrating today, great compassion, at the core value of all its social, spiritual and humanitarian activities. We celebrate Mahakaruna Divas every year, and on this day, we recollect and strive to realize personally and collectively the inspired guiding principles of the great compassion. And today is the most awesome, it's a milestone day for MIMC because we are celebrating 10th year of Mahakaruna Divas, and that too in such a prestigious organization, MDNI. बैकग्राउंड में जो भी काम कर रहा है, हमेशा मैं भिक्खू जी को भिक्खू जी कहता हूँ। सो उसका पीछे जो वर्किंग फोर्स है वो हमारा अनिल कुमार जैन साहब है। आपको जानकर बहुत गर्व होगा कि वो रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडिशनल सेक्रेटरी बनकर रिटायर्ड हुए हैं और इंजीनियरिंग आईआईटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। इतने सारे एजुकेशन और बड़े बड़े पद पर गवर्नमेंट में रहने के बाद भी वो सिंपल जीवन जीते हैं और महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर का जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनका डायरेक्टर है, उनका नेतृत्व करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। इसका पूरी जो महाकरुणा दिवस पिछले 2-3 महीने से भिक्खू जी ने देश भर हर रोज एक सेंटर में जाकर लोगों को प्रेरित कर रहा है, उसका पूरा बैकग्राउंड में श्री अनिल कुमार जैन साहब का हाथ है। मैं हृदय से अनिल कुमार जैन साहब को स्वागत करता हूँ। आज महाकरुणा दिवस का क्या महत्व है? फ्रेंड्स, we must know about the importance of this day. We remember, if you want peace on this Mother Earth in the 3rd millennium, it is high time that we remember the strategy and critical path to reach the milestone of peace. How to bring peace, how to build peace. In that case, if we do not remember these 3 words, mercy, tolerance and compassion, we have to be merciful, we have to be tolerant and we have to be compassionate. अगर हमें विश्व शांति लानी है तो हमें दयालु होना पड़ेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा और साथ साथ हमें अनुकंपा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह का काम हम लोग साथ कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द और भी नए माइलस्टोन को प्राप्त करेंगे भिक्खू संघासेना जी। मैंने इनको 2006 में कहा था और अभी तक उन्होंने हमारी इच्छा को, हमारे अनुरोध को नहीं माना। मैंने 2006 में कहा था कि 3 महीने के अंदर एक बुद्धा यूनिवर्सिटी फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एक विश्वविद्यालय बन जाएगा, पूरा खर्च हमारा ट्रस्ट करेगी। ये तैयार भी हुए, लेकिन इनके जो मेंबर्स हैं वो इतना घबरा गए, इतना बड़ा काम कैसे लेंगे हम, तो वो नहीं खुल पाया जो खुलना चाहिए। और जब एक विश्वविद्यालय होगा, इसका स्पॉन्सर होगा महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर, तो ऐसी हालत में बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बस्ट, BUST is the acronym. You know, Buddha, you see Buddha always in his bust, छाती के ऊपर ही फोटो रहता है। तो बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आवश्यक है और वह खुलना चाहिए। अभी भी हम लोग आज बात की घोषणा करने में बड़े खुश हो रहे हैं कि अगर वो ऐसा बनाएंगे तो मेरे तरफ से और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय होगा बुद्धिज्म पर, और बुद्धिज्म के साथ साथ इंटरफेथ जो सर्वधर्म संभाव की भावना है उसकी भी पढ़ाई होगी। धन्यवाद, जय हिंद। It is indeed a moment of joy to be here at this auspicious occasion to celebrate Mahakaruna Day being organized by Mahabodhi Meditation Center, Leh and other like-minded partners. I congratulate the organizers for celebrating this eventful day of Mahakaruna, great compassion, which is
very much needed in today's perspective. The concept of Mahakaruna is directly related to one of the most important human values in almost all religions and philosophical traditions of the world. Therefore, the teaching and the practice of the Buddha also makes us aware and mindful of Mahakaruna in his purposeful life, teaching, and contribution towards human civilization. I thank Venerable Sanghasena ji for organizing this very important day and inviting me to speak something on Mahakaruna as related in the Pali texts. Friends, it is rightly believed that 21st century is undoubtedly an age of scientific and technological advancement that has resulted into so-called modernization and material advancement. However, the scientific and technological advancement has failed to alleviate the basic suffering of human beings like poverty, inequality, communalism, etc. That has very much provided the fertile ground for the growth of fundamentalism, hatred, war, violence, greed, and conflict throughout the world. There is no empirical evidence to support the assumption that the so-called social and economic progress based on the materialistic conception of life can ensure happiness and well-being of the humanity. Moreover, the present crisis of COVID pandemic has created an environment of fear and uncertainty of life. In such a conflicting scenario, to bring peace, happiness, and harmony within us and in the environment around us, attention must shift to issues that help in making human a humane. It is this that makes Buddha Dharma, and more so the practice of Karuna, compassion, relevant for us today. Friends, at this moment I am reminded of the first sermon of Lord Buddha, which is called Dharma Chakra Pravartan Sutta, which is the foundation of the Dharma, which Buddha gave just after 1 month after his enlightenment in Sarnath. And he gave this discourse to the 5 mendicants who were associated with him, but they have left him. This discourse is the essence of the teachings of the Buddha, the Dhamma. As we all know, it is in this discourse that Buddha talks about the 4 noble truths and the 8-fold path, as mentioned by your principal. This 4 noble truths and 8-fold path, it is also called the middle path, which can be summed up in Pali as Tivida Sikha, 3-fold training, that is Sila, Samadhi, and Pragya. Friends, the middle path induced insight and mental calm leads to purification of mind and finally emancipation, that is Nibbana. The practice leads to the development of compassion, peace, happiness, harmony. This is something which is self-proven. According to the Pali text, the term compassion or karuna is defined as the ability to feel the distress and pain of suffering in other with empathy as it one's own and to wish them relief from suffering and distress. In Pali, just to give the feel of the language, Buddha says in one of the places, what is karuna? It is paradukhe sati. Sadhu hadaya kampan karoti iti karuna. It is paradukhe, seeing the distress, suffering of other. Paradukhe sati, and be aware. Sati is like smriti, and this is the basic, one of the fundamental teachings of the Buddha, and mindfulness, awareness. So, unless and until one feels the awareness, what he feels the suffering of others as his own suffering.
and tries to take out the help in relieving the suffering, such is Karuna. But today's world, we find that most of us, we are not doing this with the basic understanding and with the purification of the mind. I see a lot of young friends there, and when my name was being read out, I thought that some people recognized me. I am very pleased to be here. तो हिंदुस्तानी में बात करेंगे, थोड़ी सी देर बात करेंगे. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, और ये मैं अपनी किस्मत मानता हूँ कि पहली बात तो एक किसान परिवार में जन्म हुआ. माय फादर वाज अ सोल्जर इन द इंडियन आर्मी. तो सोल्जर और किसान एक ही परिवार से आते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, और उससे तो मैं ऐसे परिवार से आया हूँ. और इंडियन आर्मी में आई गॉट कमीशन एज एन ऑफिसर, एंड आई गॉट टू सर्व इन वेरी वेरी डिफिकल्ट एरियाज ऑफ द कंट्री. मतलब 1980s में देश में जहाँ कहीं मुसीबत हुई, खून खराबा हुआ, कोई विपदा आई देश के ऊपर, मैं कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है प्रेजेंट था. आप पूरा का पूरा अगर देखें तो आई वॉज वेरी लकी दैट वे. मैं क्योंकि अगर यूनिफॉर्म पहनी है तो यह है देश इतना नाज करता है यूनिफॉर्म पे. यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं, मैं उनकी पर्सनालिटी देख के बता सकता हूँ यूनिफॉर्म वाले. तो यूनिफॉर्म पहनना एक अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है. और जब मौका मिले माँ भारती का कर्ज चुकाने का, उसको जो है बहुत खुशी से हम लोग जो है बॉर्डर एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड में तैयार रहते हैं हमेशा. तो मुझे 2 मौके मिले लद्दाख में. जब मैं कर्नल था, कमांडिंग ऑफिसर था, एग्जैक्टली जिस एरिया में गलवान का और ये पेंगोंग त्सो का इशू हुआ 3 साल पहले, मैं वहाँ पे 2007-8 में मैं वहाँ पे ऐसे सीओ मैंने देखा उस एरिया को. और उसके बाद 2016 में 16-17 में मुझे मौका मिला लद्दाख में, नाउ एज ए जनरल ऑफिसर, टू गेट पोस्टेड बैक टू लद्दाख. तो ये मेरा एक हाई पॉइंट है लाइफ का, टू गो बैक टू लद्दाख एज ए जनरल ऑफिसर. और वहाँ मेरी मुलाकात हुई भिखू संघसेना जी से. इनका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है कि भिखू क्योंकि भिक्षु हैं, मॉन्क हैं. इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए इन्होंने दान दे दी, अपनी पूरी लाइफ. वो आप देख ही रहे हैं इनकी पर्सनैलिटी. इनके बारे में जितना कहा जाए कम है. और ये संघ सेना है, सेना इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है. आप बहुत लोगों को पता नहीं है, ही इज अ सोल्जर, ही वॉज अ सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी. ये जो है ये लद्दाख स्काउट्स में सोल्जर थे, और जब सोल्जर थे तो सबसे अच्छे सोल्जर थे. जब मेरी इनसे लेह में मुलाकात हुई पहली बार, तो मैंने पूछा इनके नाम के बारे में, तो इन्होंने मुझे पूरा बताया कि वो सपने में भी देखते थे कि मैं सबसे अच्छा सोल्जर बनूं. तो मेरा यूनिफॉर्म, मेरा वेपन, सब कुछ. तो कुछ साल इन्होंने लद्दाख स्काउट्स में अपना एज ए सोल्जर अपना कर्तव्य निभाया. फिर इनको कॉल आया, जो कि आपको पता है बुद्धिज़्म धर्म से या गौतम बुद्ध की सिखलाई से, और सबसे इनको एक दिन ध्यान आया कि नहीं, मुझे कुछ और करना है ज़िंदगी में, कुछ और करना है. तो इन्होंने अपना वो चोला जो यूनिफॉर्म था वो छोड़ा, और फिर जो है बेंगलोर चले गए. बेंगलोर में इन्होंने अपनी दीक्षा ग्रहण की, बेंगलोर में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, और वहीं पर जो है बेंगलोर में ये जो है एक मॉन्क के रूप पे जो है सेकेंड इनिंग्स के लिए जो हमारे सामने आए भिखू संघसेना जी. और बेंगलोर से कहीं ना कहीं मेरा पिछले जन्म का कोई इनके साथ क्या संबंध है मुझे पता नहीं है. और बेंगलोर से मैंने अपनी स्कूलिंग करी. आई एम अ स्टूडेंट फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, और इन्होंने अपनी दीक्षा बेंगलोर में ली. तो ये हमारा, जब हम मिले पहली बार लद्दाख में 3-4 साल पहले, इन्होंने मुझे एक इवेंट के लिए बुलाया था, सेव द हिमालयाज के लिए, जहाँ हम अपने देश के काफ़ी जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो वहाँ पर बुलाए गए थे. और हम बात कर रहे थे इकोलॉजी ऑफ हिमालयाज की, जिसकी अब बहुत ज़्यादा चर्चा होती है. तो वहाँ पर हमारी मुलाकात हुई. उसके बाद मैंने कई फंक्शंस में इनके साथ शिरकत की. इंटरफेथ हार्मनी पे इन्होंने बहुत काम किया, और ये इशू मेरे दिल के बहुत करीब है. अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देखो, हर 4-5वीं वीडियो, हर क्लास में मैं इंटरफेथ हार्मनी की जरूर बात करता हूँ. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये देश अगर जुड़ के रहेगा तभी जुड़ के रहेगा जब हिंदुस्तान का हर बच्चा, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, किसी स्टेट का हो, अगर हम हाथ से हाथ बांध के चलेंगे तो देश कहीं भी पहुँच सकता है. ये मेरी बहुत फर्म बिलीफ है. और ये भिखू संघसेना जी के साथ हमने कई इस प्रकार के सेमिनार किए. हमने कई ऐसे लोगों को वहाँ उन्होंने बुलाया, मौलवियों को बुलाया, श्री रविशंकर को बुलाया,
अपने धर्म के जितने सेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, कंटेम्प्रेरी जितने, सब लद्दाख में कई बार आए और मुझे इनके साथ वो स्टेज शेयर करने का मौका मिला और मुझे लगा कि हाँ, ये जितने महापुरुष हैं देश में सब एक ही बात कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात जब तक कानों में पहुंचती है तब तक ये टेलीविज़न वाले और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ये आके कहीं ना कहीं उसमें जो है ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और फिर जो है मैसेज लोगों तक क्लियर नहीं पहुंचती है। तो इनका ये तो है ही महाकरुणा, सबसे बड़ी महाकरुणा है अपने देश के लोगों से प्यार करना। Mahakaruna Divas. What a great thought, what a great day. We are fortunate to be here. What is Karuna Day? Karuna Day marks the celebration and promotion of reflection, contemplation, practice and propagation of Karuna as founded by Bhagavan Buddha. Venerable Bhante Sanghasena ji was born in the remote Himalayan region of Ladakh, an ancient state located in the far northwest of India, high on the Tibetan plateau. The Mahabodhi International Meditation Center had its humble beginnings in one small rented room in Leh city in 1986, when Venerable Bhante Sanghasena ji realized that there was a great need to offer both humanitarian and spiritual services to the people of Ladakh. From there, the center moved to the main Devachan campus in Choglamsar, which is on an impressive 200 acres of desert land in 1991, about which many speakers have spoken earlier. Against all odds and with no water, no proper roads and just harsh desert sand, through the tenacity and compassion and also the resourcefulness of the Venerable Bhikuji and his team, the Mahabodhi campus began to grow and flourish, and his dream slowly became a reality. His Holiness realized that the main root cause of poverty and social unrest was illiteracy. He knew that when people were given proper holistic education, the cycle of poverty and social evils could be broken. With this in mind, he started the first residential school for underprivileged children who came from far-flung corners of the Ladakh. I don't know how many people have gone. Even when you go there, when you land for a day or so, it's very difficult to even walk, breathlessness. But there he established all these things, bringing up thousands of children. From this initial project, other desperately needed humanitarian services were identified and added to the campus, which now houses a home for the aged, visually impaired, a monastery, a nunnery, a meditation and yoga center, and so on. Today, the campus has become a home and refuge for thousands of deserving people who live happily and peacefully together. Now, a word about this great institution where we are assembling here. Dr. Baswa Reddy, his contribution for over 33 years in the yoga, and he has been in the Ministry of Ayush since June 2005, heading the Institution of Yoga Certification Board of Ministry of Ayush. He is a renowned yoga scientist, a philosopher, and an eminent yoga master. He is recognized as one of the eminent yoga educationists and yoga experts of the country. He is one of the reasons, along with Dr. Nagendra, who formulated the International Day of Yoga and the public yoga celebration in which even the Honorable Prime Minister participated. And this great institution, where he has been able to produce thousands of yoga masters and teachers. Morarji Desai National Institute of Yoga, Focal Institute for Planning, Training, Promotion and Coordination of Yoga Education, Training, Therapy and Research in all its aspects, aims to promote deeper understanding of yoga philosophy and practices based on classified yoga amongst people. The mission is to assist the old, sick, undernourished and undereducated people
in Buddhist Asia and to help preserve the ancient Buddhist heritage and culture of Tibet and all that. Well, you know, ladies and gentlemen, ultimately what has given us unique status in the whole world is not just because we produce the largest number of software engineers, but the tradition of yoga. International Day of Yoga celebration. In fact, in the year 2002, I had participated in the International Day of Yoga celebrations. Actually, I have nothing much to say. All the wonderful things, the beautiful things have been said by our eminent spiritual masters, eminent scholars, leaders, no? They have not left anything for me to say. So it's better I shut up my mouth so that आप लोग भी जल्दी जल्दी घर जा सके. But one thing I should not forget to express my heartfelt, sincere thanks, gratitude to our very dear and respected Dr. Basav, Ishwar Basav Reddy ji for allowing us to have this Mahakaruna Divas here and for organizing everything here, such a beautiful place. Last time when I visited here, and now I see it's totally different. I can't believe when I came, today when I came here, first I thought maybe this is different place because itna beautifully decorated, everything is arranged now. So thanks to Dr. Basav Reddy ji and our Dr. Pawanji and all the entire staff and the students for arranging such a beautiful dais and decorating this whole area with natural trees and flowers and lights. It's so wonderful. We had program in many places, but this is something very special. We are having perfect moderate temperature, not so hot, not so cold, very peaceful, under the beautiful trees, so much light, and above all, we are very fortunate to have a very, very learned and luminaries to share their wisdom, their compassion, the importance of compassion in our daily life. Friends, as you have heard, my organizations, the Mahabodhi International Meditation Center, have initiated these programs, the Mahakaruna Compassion in Action programs more than 10 years back. The Mahakaruna, Maitri, Ahimsa, Yoga, meditation is nothing new for us. We have been hearing all this since childhood. The differences is there are uses that Mahakaruna in action, compassion in action. All these beautiful words will have no meaning, will bear no meaning, no fruit until and unless we put this into actions. Now we realize it is time for us to put those wonderful teachings given by our great masters, Lord Buddha, Lord Mahavira, Lord Rama, Lord Krishna, and many Rishi Munis of these great countries. It's time for us to once again think about, study about, and practice that. Not only practice in our life to make our life strong, make our country strong, but for the whole world. Friends, the world is going through tremendous challenges, so many terrible challenges. War is going on. Many hundreds or thousands of people being killed in the brutal war between Russia and Ukraine. It is nearly 1 year our world leaders have failed to stop it. There is a climate change, there is a global warming, there is a earthquake. You see, Turkey's terrible earthquake, and so many people were killed. And so many, we can't say actually, these disasters taking place, sometimes natural disaster, it's not natural, it's created by human beings.
the compassion, the love, care, concern for each other, the compassion for animals, compassion for the plants, compassion for Mother Earth, compassion for environment is diminishing, disappearing. To fulfill the human greed, they are destroying everything just to make profit, just to make money. World is going through serious challenges, and this universal compassion, this Mahakaruna, seems to be the only solution for the 21st century crisis. Mahakaruna seems to be the panacea for the ills of the 21st century. So it is time, friends, for our people of India, particularly the young generation, to stand up, learn and practice yoga, learn and practice meditation, learn and practice Mahakaruna, learn and practice ahimsa ourselves. And then we have to carry this message to all over the world. It is the century of Asia. It is the century of India. It is the time for India to stand up and get ready to lead the world with their ancient wisdom, yoga, meditation, karuna, and ahimsa. We are thankful, grateful to the Western scientists. They have done a great job. They brought a lot of material and physical comfort by inventing all kinds of machines. We are thankful to them. But we fully realize just technological, economical, material development is not enough for human beings. We need something more. With spirituality, with materiality, we need spirituality. Right? And with medication, we need meditation. All these things must bring together religion and science, ecology and psychology, physics and metaphysics, right? Meditation and medication, inner and outer, head and heart, east and west must come together. When we are able to bring the balance between these two aspects of our world or the life, then only we can think of a true prosperity, true harmony, true peaceful. Flights from Delhi to Leh, just 1 hour. Sometimes it takes from here to Noida or Gurgaon 2 hours, 3 hours. You will reach Ladakh in 1 hour, right? So we look forward to work together and spread the message of our ancient India, the message of saints and sages, Rishi Munis, for the well-being, for the happiness of all the people in the world. Right, so we should have more and more such institutions. We should more and more university colleges dedicated to compassion, dedicated to yoga, meditation, and world peace. Without these values, all kinds of modern development will prove dangerous. Right? Somebody said very rightly, I think Satya Sai Baba said, modern education without guided by spiritual values, not only useless but positively dangerous. So spirituality is India is the what you call peace. Some people have said that India, we want to make India a Vishwa Guru. In my opinion, India was, India is, and India will continue to be a Vishwa Guru to lead people on the spiritual path. Much time, it is already very late, and once again thanks to our chief guest, Dr. Kartikeya ji, for so kindly coming and gracing this Mahakaruna Day here, and our very dear Dr. Trivedi Sahib, Anil sir, P.P. sir, and here we have M.K. Gupta ji sir, and Bhai ji sir, and all of you. Once again, thank you so much.